Okay, yes, I have received some queries. Ji, Talal Ehsan, please unmute yourself. Have you attempted these questions? No, sir. No, okay. Then Hashim Ali, have you attempted these questions? Yes sir, some of them मैंने किए लेकिन बाकी टाइम नहीं था तो I didn't. जी, टाइम कहाँ आपका यूटिलाइज होता है? 5 क्वेश्चंस दिए थे, 6 क्वेश्चन थे टोटल. Sir, Hussein वो Abbas. मैं Hussein Abbas, have you attempted? Fawaz Akhtar, have you attempted? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ji, Hussein can't hear me. So just text me, have you completed? I know. जी, क्या बाकी मुझे नहीं सुन सकते? Can you hear me? Please confirm, can you hear me? Yes, we can hear, but मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि वो शायद समटाइम्स सुनना उसको वाकई बहुत मुश्किल काम है. So, जी तैयब, have you completed the task? सर जिस फर्स्ट क्लास में हमने शुरू किया था उसमें मैं एब्सेंट था तो मैंने वो पहले किया. ओके जी, मैं अगर आप देखें तो वेक्टर्स पे इस टॉपिक पे मैंने बहुत टाइम लगा रहा हूँ. जब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हम ये वेक्टर्स कर रहे हैं. इसकी इम्पोर्टेंस इसी से अंदाजा लगा लें कि मैं टाइम इसको दे रहा हूँ और ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है. और उसके बाद देखें जैसे ये टॉपिक्स एंड होंगे आपके दिसंबर में, आपके फाइनल एग्जाम आ जाएंगे, फिर आपको यही नहीं समझ आएगा कि हम O3 के टॉपिक्स को पहले परफेक्ट करें, O2 के टॉपिक्स को रिवाइज करें या O1 की प्रैक्टिस करें. उसके बाद 7th 8th तो अलग है. सो प्लीज अपने टाइम को वेस्ट मत करें. 5-6 क्वेश्चंस के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते तो इट मींस यू आर प्लानिंग टू अपीयर इन O लेवल मैथमेटिक्स इन 2025. आपको तो अभी ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 11 तक सारा सिलेबस रिवाइज करना है. उन सब के टॉपिकल पास पेपर्स करने हैं, उन सब के फिर ईयरली पास पेपर्स करने हैं. तो ये क्या प्लानिंग, किस प्लानिंग के मुताबिक आप चल रहे हैं कि 6-7 क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते और यही टॉपिक क्योंकि अभी आप नहीं कर पा रहे, इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम यही आपको टॉपिक देगा. आप एंड पे यही कह रहे होंगे वेक्टर्स नहीं हो रहा, वेक्टर्स नहीं हो रहा. O3 में जो टॉपिक्स रखे गए हैं देयर इज अ रीजन फॉर दैट. इनको पहले क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये टफ थे. लेकिन अगर आप इनको लाइट लेंगे तो ये आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे. सो प्लीज बी सीरियस. जी, जो कुछ लोगों ने क्वेरीज कही हैं वो मैं पहले करता हूं. अगर आपने नहीं किए हुए तो प्लीज आपको ये क्वेश्चंस की क्वेरीज पार्ट में बीच में से पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, उनका कोई फायदा नहीं होगा. सो बेहतर है आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो मैंने होमवर्क में दिए हुए थे. So in question 16, Bakshi, you are asking for 16B part, 16B part. Okay, there is no other part of question 16. Okay, let's see what is 16B part.
Okay, here is question 16. So you are done with the A part. So I might need those answers of A part. I'm directly starting from B part. B part says, जी I'm repeating again, अगर आपने नहीं किए हुए questions तो ये डायरेक्ट जैसा बी पार्ट अब मैं करूँ ऐसा करने का फायदा नहीं है. आप जो मिसिंग वर्क है वो ये आप कंप्लीट करें. 15 क्वेश्चन करें, 16 17 ये कंप्लीट करें. आप आपको डायरेक्ट मिडिल से नहीं समझ आएगी. Okay, it says G is a point on AB such that OG is equal to 3 by 5A plus 2 by 5B. One thing is sure, okay, we know G is somewhere on the line A and B. We don't know exactly where is that. Say here is G. Say this is the point G. We have to express part 1. We have to express AG in terms of A and B. So AG find करना है हमें. So अगर आपने AG find करना है तो path should be A to O and O to G. A to O है vector minus A and vector O to G is given here, which is 3 by 5A plus 2 by 5B. 3 by 5A plus 2 by 5B. So if you simplify this, so your vector AG will become minus A plus 3 by 5A, that will become minus 2 by 5A plus 2 by 5B. So this is the answer of part 1 of B. Now second part, you have to find AG ratio GB. AG ratio GB. आप मुझे I need the answer of AB part 1A में से I think वो आपका आंसर था minus A plus B. Your full vector AB was minus A plus B. Now look at that vector AG जो भी आपने find किया है. इसको मैं जरा different way से लिखूं अगर यूं. See, 2 by 5 can be taken as common. And inside you'll get minus A plus B. What does it mean? ये minus A plus B तो आपका vector AB है. So I can write simply here AG is 2 by 5 of AB. So this is telling you a lot. Mean this part AG, this part AG is 2/5 of AB, 2 by 5 of AB, 2/5 of AB. AB is total. So it means AG is having 2 parts and full vector AB is having 5 parts. 2/5 of AB mean AG is having 2 parts, full vector AB is having 5 parts. So it means GB will be having 3 parts. So it means here this is 2, full vector is 5, so this should be 3. So the ratio between AG and GB is 2:3. G, Bakshi, is that clear? This part, the ratio between AG and GB. Yes, okay, good. Now the last part is express FG in terms of A and B. Now we have to find FG. So here is F and here is G. So you need to make a path. I'm following F to C, C to O, and then O to G. See here, I'm doing here this FG is. Okay, FG is FC. First we need to see what is vector FC. आप already आप देखें यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है CF is 3/4 CD. आपका जो फुल वेक्टर CD है वो है वेक्टर B. जो CF है वो 3/4 है.
3/4 of B. But now we are moving against the direction of B. We are moving F to C. So it is minus 3/4B. This is FC. Then CO is minus C. And OG is here 3/5A plus 2/5B. 3/5A plus 2/5B. Now simply add and subtract the like terms. So the A term 3/5 is only single term, so will be written as it is. What is minus 3/4? Take the LCM of these two terms. Mean minus 3/4 B and 2/5B. Take the LCM of these two. Minus 3/4 plus 2/5. What are you getting? Minus 3/20. If you take the LCM of if you solve minus 3/4 plus 2/5, LCM is 25 times 3, 15, minus 15 plus 8, minus 15 plus 8 is minus 7/20. So minus 7/20B and the C term is minus C simply. Gee, that was the B part. I hope it's clear. Question 16, B part. Yes, Bakshi? सर इन क्वेश्चन 17 पार्ट 2 मैं कंफ्यूज हो गया था. उन्होंने कहा था कि लेबल ड्रॉ करें P माइनस क्यू, लेकिन P माइनस क्यू में मैं भूल गया था कि वेक्टर किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, यानी किस तरफ जा रहा है P माइनस क्यू में. ओके, बिल्कुल मैं बताता हूँ. 17B पार्ट बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा हुआ है. 17B पार्ट. ओके, आई एम कंफ्यूज इन 17 पार्ट 3. देखते हैं क्या है. So question 17 is इसका A सेकंड पार्ट है, आगे 3 पार्ट भी है. ओके देखें, इन क्वेश्चन 17 P वेक्टर इज गिवन, Q वेक्टर इज गिवन, P माइनस Q ड्रॉ करना है. सो बेसिकली आप पहले P माइनस Q वेक्टर फाइंड तो करें है क्या. So it is P is P is 1 minus 3 minus Q is minus 2 0. So we are getting 1 plus 2 3 minus 3 minus 0 is minus 3. This is a vector P minus Q. So if you want to draw the vector P minus Q, तो एक ऐसा vector होगा. 3 minus 3 is telling कि you need to move 3 unit right, and minus 3 is telling you need to move 3 unit down. अब ग्रिड में कहां से स्टार्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट ले लें, बट ऐसा स्टार्ट लेना कि आपका वेक्टर उस ग्रिड में कंप्लीट हो जाए. सो आई एम गोइंग टू टेक स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस पॉइंट. So 3 unit right or 3 unit left यहाँ complete हो जाएगा. So here, this is the point. So let's start counting. 3 unit right. So 1 unit right, 2 unit right, 3 unit right. So 3 unit right and now 3 unit down. 1, 2, 3. So it will end here. So end होगा यहाँ पे. So इसको हम join कर देते हैं एक straight line से. And what is the direction? This is the direction. This is the vector P minus Q. So you can start from any point, but you need to simply draw a vector which is moving 3 unit right and 3 unit down. I hope it's clear. Okay.
Okay, third part. Shamir is asking for 17, third part. Here is the third part. The vector R is shown on the unit grid below. You can see the vector R. It is given that R is equal to AP plus BQ. Find the values of A and B. Okay, I'm writing that statement equation here. R is equal to AP plus BQ. Okay, out of these, we need to find A and B. क्या बाकी vectors हमें पता हैं? Yes, we know. We know the vector P, we know the vector Q. चले जो vectors आपको पता है वो तो आप copy करें ना यहाँ पे. A as it is. What is vector P? So vector P, I cannot go to the previous page. Can you please tell me what is vector P? Bakshi, can you please? Sir, vector P is 1 minus 3 and Q is minus 2 0. Yes. And what is vector R? Can you tell me the vector R in terms of column vector? Yes, we can. So start counting. Simply see the diagram and tell me the vector R in terms of its column vector. So R की direction देखें यहाँ से इस तरफ जा रही है here. So it is starting from this point. See, counting करें 1 unit left, 2 unit left, 3 unit left, 4 unit left. So 4 unit left mean minus 4. Down, 1 unit down, 2, 3, 4 unit down, 5, 6 unit down. So it is 4 unit left minus 4 and 6 unit down mean minus 6. Now that's simply matrices question now. Minus 4 minus 6 is equal to. If you multiply A inside, you will get A times 1A minus 3A. If you multiply B inside, you will get minus 2B. B into 0 is 0. Add the right side. A minus 2B minus 3A plus 0 is minus 3A. Minus 4 minus 6. Now just because these two matrices are equal, so equate the corresponding elements. So minus 4 equal होगा A minus 2B के जहां से A भी नहीं आ सकता, B भी नहीं आ सकता. But the other one, minus 6 is equal to minus 3A. So if you equate the Y component, you will get the value of A, which is 2. And once you have the value of A, now you can compare the X component, mean minus 4 is equal to A minus 2B. Minus 4A is 2 minus 2B. So 2B is equal to 6. B is 3. So that is how you will find the values of A and B. A is 2, B is 3. Yes, Bakshi. Sir, question 18 में जो third part था, कह रहा है find the equation of the line PQ. I just wanted to ask you y is equals to mx plus c वाली equation मांग रहा है हमसे, क्योंकि बिल्कुल y is equal to mx plus c वाली ही मांग रहा है, ये coordinate geometry है. Got it. Okay, more questions if I see. After 17, you're asking for 18, part 3 and 4. Let's see question 18.
Okay, here in this question, you may use the grid below to help you. You may use, it is not compulsory to use. If you find if you think you आप direct कर सकते हैं, तो you should go for that. Okay, the point P has position vector 4, 2. So position vector mean ये क्या vector given है? ये OP given है. The position vector of Q mean this OQ is given. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब P के coordinates हैं आपके पास 4, 2. And the coordinates of Q are 8, -3. We have to find vector PQ. Formula क्या होता है? PQ is equal to position vector of Q minus position vector of P. PQ is equal to OQ minus OP. OQ is 8 -3 minus OP is 4, 2. So just subtract. 8 minus 4 is 4, -3 minus 2 is -5. That is the vector PQ. Then find the length of PQ. It's under root x square plus y square, mean 4 square plus -5 square, which is 16 plus 25, 41. If this is paper 1, then it will be square root 41. Agar paper 2 hai, so you can find, you can calculate, it will be 6.40. So these are the first two parts, but you are not asking for the first two parts. Your actual question is third and fourth part. So find the equation of the line PQ. देखिए equation of the line होती है y is equal to mx plus c. ये third and fourth part are basically from your coordinate geometry, grade 9. So find the equation of the line PQ. Y is equal to mx plus c. M find कैसे होगा? Gradient. और c कैसे find होगा? You need 1 point. Gradient find करने के लिए you need 2 points. So दोनों points given है आपको. देखिए P भी given है और Q भी given है. तो gradient भी हो जाएगा. लेकिन मुझे पता है कि ग्रेडियंट हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग y2 minus y1 over x2 minus x1 से. वो आप कर सकते हैं. कोई मुझे डायरेक्ट बताएगा इसका ग्रेडियंट कैसे होगा? Who can tell me the gradient of the line PQ without using that formula y2 minus y1 over x2 minus x1? Yes, Bakshi raised his hand. G. हम सर डायरेक्टली तो मैंने वैसे मेंटली किया था -3 और -2 कर दिया और 8 और 4 कर दिया. आप ये मांग रहे हैं या नहीं? नहीं मेंटली का मतलब ये तो आपने वही माइंड में ये कैलकुलेशन की है ना, y2 minus y1 मीन आपने -3 -2 over 8 -4 किया. जी सर. कोई हम सर जो पी क्यू का पोजीशन जो वेक्टर था पी क्यू का उसको हम उल्टा कर दें तो आ गया. बिल्कुल सही कह रहे हैं. 4 Shamir minus is 5. also right. Gradient is basically rise over run. So PQ जब आपको वेक्टर पता है वो ये आपको बता रहा है 4 यूनिट राइट 5 यूनिट डाउन. तो राइज जो है ये बेसिकली आपको राइज या फॉल बताता है और ये एक्स कोऑर्डिनेट आपको रन बताता है. सो राइज ओवर रन. सो राइज इसमें तो है नहीं है इसमें क्योंकि -5 है. फॉल है कितना 5 यूनिट and run is 4. So -5 over 4 is the gradient. So gradient is -5 by 4 और equation find करने के लिए c चाहिए. So y is equal to mx plus c. Y is equal to -5 by 4x और c find करने के लिए कोई एक point put कर ले. Say I'm using p here. So p x4 y2. Muqtada, grade 9. Gradient y2 minus y1 over x2 minus x1. Do you know that thing?
Muqtada, please respond. Do you know this formula? Y2 minus y1 over x2 minus x1. You did this in grade 9. So you have the point P and also the point Q. Should use those two formulas here. Those 2 points here, you will get the gradient. Or the otherwise is rise over run. Okay, next. So once you have gradient, C find करने के लिए use any one point. I'm going to use 4, 2, P. Y is 2. X is 4. So 4 and 4 will be cancelled. So it is minus 5 plus C. C is 7. So when C is 7, so your equation is Y is equal to minus 5 by 4 X plus 7. This is the equation of the line. PQ, third part. Okay, fourth part. Given that Q is the midpoint of the line PR, देखें ये मैं कहता हूं कि ये है line PR. Suppose say this is the point P, this is R, and it says Q is the midpoint. So midpoint means these two sides are equal. We have to find the coordinates of R. अब P के coordinates क्या हैं? 4, 2. Q के coordinates are 8, minus 3. We have to find the coordinates of R. So use the midpoint formula. जी midpoint formula I hope के सबको आता होगा. वो क्या था midpoint formula? Average of x coordinate, comma average of y coordinate. अगर आप midpoint के coordinates find करना चाहते हैं तो वो क्या था? x1 plus x2 over 2. जी मैं बाकी erase करने लगा हूं यहां से. So midpoint formula is x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. ये है midpoint formula and this is used to find the coordinates of the midpoint. क्या हमें यहाँ पे midpoint के coordinates find करने हैं? No. The coordinates of the midpoint are given. आपको किसी एक corner point के coordinates find करने हैं. So इसके multiple ways हैं. एक method था. तो suppose हम R के coordinates select कर लेते हैं कि they are x and y. So जो formula है average of x coordinate mean अगर ये x coordinate है एक और ये एक दूसरा x coordinate, इन दोनों की अगर average लेंगे आप तो you will get the coordinates of midpoint. जी शामिर मैं उसकी तरफ भी आऊंगा इसके बाद. So if you take the average of x coordinate mean 4 plus x, these are the x coordinates of the corner points over 2 करेंगे तो आपके पास आएगा midpoint का x coordinate और वो है 8. So 4 plus x over 2 is equal to 8.
सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यूज नहीं हो रहा, मिड पॉइंट फाइंड नहीं करना, मिड पॉइंट गिवन है इस दफा। तो यहां से आपके पास x आ जाएगा, और इसी तरह अब एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट लें, 2 plus y divided by 2 mean average is equal to the coordinates of the midpoint. Y coordinate of the midpoint is -3. So इधर से आपके पास x आ गया, 8 times 2 16, 16 minus 4 is 12. And from here y is -6 minus 2 is -8. So the coordinates of r 12 minus 8. सर हम इस सब के अलावा सिंपल ये नहीं देख सकते कि P से Q तक वो 4 आगे गया x में, तो Q से भी आगे 4 ही जाएगा जो 12 है, और फिर P से Q वो -5 हुआ है, तो हम -3 से भी -5 डालें तो 12 -8 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ये उसी की तरफ ही जाने लगा। मैंने कहा था स्टार्ट में कि मल्टीपल मेथड्स है, एक ये मैंने बताया, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अदर मेथड। जी आप लोग जब ग्रेड 10 में थे तो उस वक्त भी ये था, मैंने ये एक्सप्लेन किया था। सी हियर कि if you want to find the coordinates of x, sorry coordinates of r, so क्योंकि q मिड पॉइंट है तो आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज चेक करें कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 था, तो जब आप q तक पहुंचे तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8, so the change is of 4 unit। और क्योंकि p q लेंथ एंड q r इक्वल है, q मिड पॉइंट है, तो जितना चेंज p से q है वही चेंज q to r है। So 4 plus 4 is 8, so 8 plus 4 will be 12. So the x coordinate of r will be 12. Now look at the y coordinate. Y coordinate of p is 2, और यहाँ पे y coordinate of q is -3। क्या चेंज आ रहा है? 2 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आया? 2 minus 5 is -3। So 2 minus 5 is -3, तो -3 में से फर्दर आप -5 करेंगे तो you will get -8। So the coordinates of r is 12 minus 8, the other way. So जो भी आपको समझ आए उससे आप कर सकते हैं। So that was question 18. I think I have discussed all the queries जो कि आपने यहाँ पे mention की हुई हैं। I don't think के कुछ रह गया है। Is there any problem in question 19, 20, 21, 22? Okay, you're asking for 18b last two parts. वो parts जो कि इस topic से नहीं है। So ये topic है आपका similarity। सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने जैसा पिछला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा उसमें भी आपको प्रॉब्लम किस में था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जो क्वेश्चन पूछे इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? सिमिलैरिटी में। सोचे कि आपको इससे आइडिया होना चाहिए कि आपके प्रीवियस टॉपिक्स आपको भूले हुए हैं। हम करंट टॉपिक्स नहीं कर रहे, करंट टॉपिक्स भी नहीं कर रहे, प्रीवियस भी नहीं कर रहे, तो हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्लीज सब सीरियस हो जाएं। आपके पास आप फाइनल क्लास में हैं, इससे पहले आपने खैर आपके जो अपीयर होना था पाक स्टडीज इस्लामियात में, खैर वो भी नहीं हुए, वो एक अलग सिचुएशन है। बट ये जो फाइनल ईयर के सब सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर नॉट इजी, बिल्कुल इनको लाइट मत लें। Okay, question 18.
सेकंड पार्ट, देखिए उससे पहले आप ये प्रूव कर चुके हैं, प्रूव नहीं किया, इनफैक्ट गिवन था क्वेश्चन में, दैट OAB and OCD are similar. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, दैट ट्राइंगल OAB, दिस ट्राइंगल and the large triangle mean OCD, they are similar. And what do we know about similarity? We know for similar shapes the ratio of corresponding sides is equal. लेंथ की रेशियो इक्वल होती है, जितनी भी लेंथ्स हैं, कोई भी लेंथ हो, वो लेंथ है, वो रेडियस है, वो डायमीटर है, वो हाइट है, इवन वो पेरीमीटर है, पेरीमीटर भी तो एक लेंथ होती है, वो एरिया तो नहीं होता, तो वो भी इक्वल होती है। सो रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। सो अगर हम लिखें L1 over L2, H1 over H2, R1 over R2, diameter D1 over D2, width over width 2, perimeter over perimeter 2. So ये सारी lengths हैं, so the ratio of corresponding lengths is equal. Okay, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, find in its simplest form the ratio of perimeter of triangle OAB and the perimeter of triangle OCD. उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी लेंथ OA यहाँ पे वेक्टर A था, तो फुल वेक्टर आपका OC क्या है यहाँ पे, या OC नहीं किया हुआ, चलें OD, या आपने AB और BC किया हुआ है, AB और CD भी किया हुआ है। जी आप मुझे AB और CD के आंसर चले बता दें, आपके क्या हैं AB के आंसर और CD के आंसर। Please raise your hand, Bakshi, so that I can Daud, yes, Daud. Sir, AB is B minus A. Should I also tell CD? Yes, CD. CD is 4 bracket B minus A. So see the relation, अगर AB 4 minus A है, तो CD उसका 4 times है, 4B minus A. So what is the ratio between AB and CD? Its ratio is 1:4. So जब आप ratio 4 है, so 1:4 mean आपको पता चल गई कि उनमें लेंथ में रेशियो ये है, हाइट में भी यही होगी, रेडियस में डायमीटर है, ये तो रेडियस डायमीटर यहाँ पे आता नहीं है, सो उनके पेरीमीटर की भी रेशियो क्या होगी, 1:4, क्योंकि पेरीमीटर भी ये, हाँ अगर सिमिलर शेप्स और की बात तो एरियाज की रेशियो होती है A1 over A2 is equal to L1 over L2 whole square, that is for areas. और अगर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम के लिए V1 over V2 is equal to L1 over L2 whole cube. बट जब तक लेंथ्स हैं, मीन पेरीमीटर, विड्थ, लेंथ, हाइट, तो वही रेशियो होगी जो लेंथ की रेशियो होगी। अब बी पार्ट, he is asking for the ratio of the area of triangle OAB to the area of trapezium ABDC. देखिए ट्रायंगल और ट्रेपीजियम कभी आपस में सिमिलर नहीं हो सकते, मीन अगर आपको ये पता है कि ये लेंथ 1 है, फुल 4 है और ये पार्ट AC वाला 3 है, तो आप इसको 1:3 का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल और ट्रेपीजियम तो आपस में सिमिलर ही नहीं है। और ये जो फॉर्मूला A1 over A2 is equal to L1 over L2 होल स्क्वायर है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, सिमिलर शेप्स के लिए। तो आप ऐसा करें, ये जो ट्रायंगल OAB है, OAB ये सिमिलर है OCD के, आप इन टू ट्रायंगल्स में एरियाज की रेशियो फाइंड करें पहले, मीन
by using A1 over A2 is equal to L1 over L2 whole square से. So it is A1 over A2. A1 मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ area of triangle OAB over area of triangle OCD is L1 over L2 whole square. इनमें तो रेशियो 1:4 है, so ये आ जाएगा 1/4 square. मतलब the ratio is 1:16. जी जरा आप समझिएगा कि अगर इस ट्रायंगल और लार्ज ट्रायंगल की रेशियो है वो 1:16 है, मतलब स्मॉल ट्रायंगल का एरिया अगर 1 हो, लार्ज ट्रायंगल का एरिया 16 हो, तो उस ट्रेपीजियम का भी फुल का एरिया अगर 16A हो, स्मॉल ट्रायंगल का एरिया 1, तो इसका मतलब 16 से 1 माइनस अगर करें, 16 में से अगर हम 1 माइनस करें तो उसका एरिया 15 आएगा. सो ये एरिया ट्रेपीजियम बनेगा. सो अगर ट्रेपीजियम का एरिया स्मॉल ट्रायंगल का एरिया 1 है, बनेगी दैट विल बिकम 1:15. So I hope you understand कि जो आपने सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट्स किए थे कि फुल ट्रायंगल का एरिया अगर 16 हो, स्मॉल का 1 है, तो फुल में से स्मॉल ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 - 1, तो आपके पास ट्रेपीजियम का एरिया आएगा 15. सो ट्रेपीजियम 15, स्मॉल का 1, सो रेशियो ऑफ ट्रायंगल OAB is 1:15. जी दाऊद, अभी समझ आई है? मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया या डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? तो करना क्या है, देखें, आपने पहले जो एरिया फाइंड किया हुआ है, आपने जो एरिया की रेशियो फाइंड किया वो फाइंड किया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस वन. ये अगर 1 हो तो दिस फुल एरिया विल बी 16 फुल. ये तो आपने 1/16 से फाइंड, क्योंकि ये सिमिलर थी. अब अगर फुल ट्रायंगल्स का एरिया है, स्मॉल का 1 है, तो आप ये मुझे बताइए कि अगर उसमें से मैं 16 में से 1 माइनस करूं तो ये जो एरिया आएगा ये ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, और वो कितना आएगा? 15 आ जाएगा. सो अगर ट्रेपीजियम का 15 है एंड द अदर स्मॉल ट्रायंगल इज 1, क्योंकि आपको ट्रायंगल ऑफ OAB तो 1 है और ट्रेपीजियम का 15 है, सो इट इज 1:15. Okay, I hope it's clear now. Note down the homework. आपको मैंने आज 22 तक दिए थे. Now you have to complete the worksheet. I think 26 questions हैं उसके. So remaining 4-5 questions जितने भी रह गए वो आपने complete करने, लेकिन अगर आपके previous भी complete नहीं है तो वो भी आप. So next class will be the last class of this topic, vectors. See you in next class. Thank you so much. Allah Hafiz.